Good morning, ma'am. Good morning, beta. By the time others come, beta, start reading about this. Did you go to Good school morning, yesterday? ma'am. Good morning. You all done your LOC work? Yes, ma'am. Okay. Some students have to go today also, no? By the time others come, please read this quickly. Sample papers which CBSE has issued. No, ma'am. Not seen. Chalo, next meeting when we have today, when this meeting closes, I'll share with you the sample papers only. मैम कल क्लास हुई थी बायो की. हाँ, कल क्लास हुई थी. मैम हम लोग को तो जाना था, हम लोग की क्लास छूट गई कल की. कितने बजे तक? 8:30 तक 8:40 तक थी क्लास. As far as I remember, Yes, except for ma'am. यशस्वी सबने ही अटेंड करी थी क्लास बेटा. Almost. Okay, ma'am. Ariba was there, Aman was there, वेदांत सभी लोग थे. आपका टाइम के 9 to 10 वाला स्लॉट था. था. ओके, तब तो आप अटेंड कर सकते थे पूरी आराम से. 8:45 तक की थी क्लास तो. I thought कि आज क्लास नहीं होगी, मतलब कल. ओके, आपको यही लगा होगा. फाइन. टुडे आई एम प्लानिंग सेकंड मीटिंग में आपसे सैंपल पेपर शेयर करूं. यू शुड सी इवन इंग्लिश का जो सैंपल पेपर है बेटा, वो बहुत ही डिफरेंट है. उसमें मैथ्स का बहुत सारा पार्ट है. ग्राफ, पाई चार्ट, कॉम्प्रिहेंशन है. दैट इज Yes, लाइक ma'am. इट्स नॉट नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन. उसको उन्होंने वैसे बना दिया है. ग्राफ सा दे, पाई चार्ट सा दे, उसको रीड करके यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड एंड आंसर द क्वेश्चंस. Now, whenever I have a English class in your class, I'll share the English sample paper with you, and then we'll see. You'll see कि कितना different है. The paper this year that we're expecting is going to be very different. Okay, let's start. We were doing some diseases. We are going on to the next diseases, that amoebiasis. Okay, beta, learn the scientific name for this. Enteritis. See the spelling also. Amoebiasis, commonly we call it as amoebic dysentery. And proper word for this disease is enteritis. This is found in the large intestine of humans. Where is it found? It is found in the large intestine of humans. Transmitting agent pathogen is housefly. It transmits a parasite from the feces of the infected person to the food, thereby contaminating it. So people who defecate in open, there it is a problem. From there, the parasite moves with the help of these pathogens, that is houseflies, and then it goes to food which is not covered. Cramps, stools with excess mucus and blood clots. Stools means the excess, the removal of waste. Then we have drinking water and eating food contaminated with fecal matter are the major sources of infection. So if you see somewhere, the major sources of infection are what? Contaminated food only, beta. So this is all about amoebic dysentery or enteritis. इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना. You just need to remember this name, enteritis. Found that large intestine. Who is the vector? It is housefly. And the symptoms. Just 1 minute to read, then we'll move on to the next disease.
Have you read about this? Enteritis? I'm planning to discuss or share, rather not discuss, to show you the latest sample paper which has been issued in biology as well. So I want you to do that as well. Chaliye beta. Let's move on to helminthic diseases. The third category now. Ascariasis, causative agent of ascariasis is a helminth. The name is Ascaris lumbricoides. I think you know this name of helminth. It is parasite, commonly what we call it as roundworm. It is transmitted through contaminated water, vegetables, fruits, etc. If you will see beta, there are a lot of similarities इसमें और इसमें अगर आप देखोगे तो दोनों के अंदर. First similarity क्या दिख रही है? मैम Anything? कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर जो हो रहा है. Yes, very good. Contamination जो है वो basically जो disease है, it is because of एक चीज और आपको बहुत important चीज दिख रही होगी जो सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर. इंटेस्टाइन. Excellent, very good, very good. This causative agent, this parasite Entaviva histolytica is found in the large intestine of humans. And अगर यहाँ पे आप जाके देखोगे तो ये भी intestinal parasite है. This is transmitted through contaminated water, vegetables, fruits. एक और similarity हमें दोनों के अंदर मिल रही है. Exposure to soil, water, plants, etc. Contaminated with the feces matter से था. यहाँ भी आपका किससे आ रहा है? Fecal matter. The fecal matter, it contains eggs of the parasite of the infected person and spreads this diseases. So there are three main similarities you will have. However, symptoms काफी अलग है. Internal bleeding, muscular pain, fever, anemia, and blockage of the intestinal passage. That is all we need to remember about helminthus disease. Ka first disease, ascariasis. Name the causative agent, beta. Helminthus. Which helminthus? Ascariasis. What is this? Lumbricoides. Lumbricoides. Ascaris lumbricoides. What is its name? Ascaris lumbricoides. This is how we pronounce it. Commonly, you know, it is known as the roundworm. It is also known as the intestinal parasite because it stays in the intestine of humans. चलिए आगे. Contamination वही था, water, vegetable, fruits, species वाला part भी वही है. Let's move on to the second helminthic disease, that is elephantiasis. ये याद रखना easy है बेटा helminthic diseases because ये easis से finish होता है इनका नाम. So if they ask you about two helminthic diseases, talk about ascariasis and elephantiasis. Okay, these are the things you'll talk about. Ascariasis and elephantiasis. There is a good news for you people. आपकी class 40 minutes की हो गई है 45 के बजाय. All classes will be 40 minutes now, not 45 minutes. Thank you, ma'am. So half an hour और कम हो गया आप लोगों का. We are going to do the date sheet now from 23rd of November. How many of you have said yes to come and write your exams? वहाँ पे शायद से कल बात हुई थी. Sir was saying you people will come to write your reports. नहीं, said तो ठीक है. How many of you will actually come to write your reports? वहाँ तो बहुत लोग said बोल दिए. खुशी will come. What about you, Aman? Aman Singh? He's not careless. How come he's behaving like this? Anshu, what about you? Yes, Today, ma'am. Anshu was the first one to join the meeting. Will you come for your pre-boards? Will you come and write your pre-boards, or would you like to give online pre-boards? No, ma'am, I won't come. You will also come. Apurva? Then we have option of giving pre-boards online. We have options, beta. Those who want to come can come. Others can give online as well. We have options. But I would suggest that you should come for pre-boards. Because you need to write, beta. एक भी seriously 3 hours का exam दिया कहाँ है आप लोगों ने? अच्छा, this reminds me, you people remember what chapters came in the first half yearly wala examination? Yes, ma'am. Khushi, you remember? Yes, ma'am. Okay, then you do one thing today after classes. Send the name of all the chapters which were not included in the first term examination. That would be your syllabus.
Yes, that would be your Okay. syllabus for the second term exam, which we are having in November after Diwali. This rule will be followed in all subjects. All those chapters which came in the first term will not come in the second term. So we need to post the syllabus, and we also need to do the date sheet today. Biology, you only do it, Khushi, just send on my personal number. Let's include all those chapters which are not included in the first term, that is your half yearlies. We'll have they would be your syllabus for the second term now. So second term, ज़्यादा difficult नहीं होगा, you will have only half of the syllabus coming. No, ma'am, it is difficult. And December, very soon after another, देखो बेटा अब पढ़ाई खत्म. If you see, now hardly any studies are going to be there for you people. By the end of October, we are going to complete your syllabus. Most of the teachers have given the deadline of 14 November. 14 November is Diwali. So before Diwali, everybody has said we'll complete the syllabus. And Diwali is on Sunday. So जो next Monday you got your exams. After 1 week of Diwali, you have your exams. So आप ये समझो, the exams are starting from 23rd of November, and exams will be on alternate days. Alternate days मान के चलिए 5 subjects means 10 days तो चले गए. So by 3rd of December, your exams will get over. These wala exams. Another 10-12 days के बाद we'll start pre-boards. Somewhere in the last week of December, we'll start with the pre-boards. Then what time is left now? There's hardly any time left for your classes. Today is 15th, if I'm not wrong. Yes, ma'am. So Yes, seriously, ma'am. so hardly 2 weeks are left. 2 to 3 weeks are left, that is it. Let's see the syllabus part, how much is left. After I discuss this disease, I'll discuss with you the syllabus also. बेटा सब लोग रुके रहना, हम लोग PDF discuss करेंगे, sample paper biology वाला. And if I have a class with you of English today, make sure you attend this class. I'll share with you the sample paper of English. वो maths के paper की तरह लग रहा है, जो paper अभी आया English का. I want everybody to see the pattern. Elephantiasis, causative agent of elephantiasis are filarial worms, Wuchereria bancrofti, and Wuchereria malayi. Speak the names. Wuchereria bancrofti. Wuchereria bancrofti, Wuchereria malayi. बेटा मैंने जानबूझ के बायोलॉजी पीरियड को फर्स्ट रखा है टाइम टेबल बनाते समय, ताकि आप फ्रेश माइंड में सबसे पहले पढ़ लो. Wuchereria bancrofti, Wuchereria malayi, and the transmitting agent vector is the female Culex mosquito. Vector बोलो बेटा. Female Culex Female mosquito. Culex mosquito. कल हमने 2 मॉस्किटोज के बारे में और पढ़ा था, जल्दी से बताइए. देवर एक्टिंग लाइक वेक्टर्स. कौन से थे? Female Anopheles. एंड एक और था. Aedes aegypti. यस, वेरी गुड. एडिस एजिप्टी 2 डिजीजेस कॉज कर रहा था. कौन से? चिकनगुनिया. चिकनगुनिया. चिकनगुनिया एंड डेंगू. बेटा ये चैप्टर ऐसे ही याद होगा डिस्कशंस करके, एक दूसरे से बात करके. ओके, लाइक अ डिस्कशन दैट वी हैव. अगेन आई एम सेइंग चिल्ड्रन, इंग्लिश की क्लास अटेंड कर लेना जिस दिन भी पीरियड हो. यू विल बी सरप्राइज टू सी द सैंपल पेपर जो आया है, बिल्कुल अलग है पैटर्न. आई एम गेटिंग अ बिट वरीड आल्सो कि जिन्होंने मैथ्स ठीक से नहीं पढ़ा है 8th 9th 10th में, वो लोग कैसे इंग्लिश का एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे. यस मैम, आई सॉ मैम जो आपने कल ग्रुप पे भेजा था. हाँ मैम बहुत ही अलग है, मतलब इंग्लिश का अलग. तो लग ही है. हाँ वो मैथ्स पेपर लग रहा है. श्रेयांश वाज सो एक्साइटेड, हैप्पी. अरे मैम मजा आ गया seeing at the paper because it's स्टैटिस्टिक्स ज्यादा थी. yes, comprehension passages में stat pie charts हैं, graphs हैं. Though it is not difficult, but ये है कि it needs a brushing up session, you know, for stats as well. तो I am really worried now कि मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों का कैसे. पेपर ऐसे ही आ गया तो हाँ, थोड़ा सा स्टैट्स का रिवीजन देना पड़ेगा आप लोगों को कि पाई चार्ट्स कैसे रीड किए जाते हैं, ग्राफ कैसे रीड. इमेजिन अगर सैंपल पेपर इशू नहीं होता एंड नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए इस तरह का एक एग्जामिनेशन पेपर आ जाता है. सो वी आर टोटली आउट ऑफ टच. आई थिंक स्टैट्स, ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स तो 10th में भी नहीं है. मैम पाई चार्ट 8th 10th में नहीं थे. हाँ मैम थे. नहीं थे. है. मैम 9th पढ़े हैं थोड़े पर बहुत. 8th में थे शायद. 8th में पढ़े होंगे. हाँ. 8th में नहीं. हाँ 9th 10th के मैथ्स में नहीं है पाई चार्ट्स. आई नो. नई ग्राफ्स वो ओगिव्स वगैरह हैं. यो इफ यू रिमेम्बर आपके 9th 10th में वो ओजिव्स बनाते हो आप लोग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल वाला.
बट ये हिस्टोग्राम और पाई चार्ट्स तो नहीं है. हिस्टोग्राम्स एंड पाई चार्ट्स आर इन क्लास 8. So class 8 के बाद एकदम से this thing coming up. So it needs a revision session. Yesterday I had math students with me. शाम की क्लास में they were math students. और वो बच्चे भी ये कह रहे थे कि we need to revise. Because maths में भी ये वाला पार्ट तो है नहीं. However, commerce students के लिए ठीक है. They are doing graphs. So commerce students वो saying कि मैम हम लोग कर लेंगे क्योंकि उन लोगों की इकोनॉमिक्स में काफी सारा stats पार्ट है. So they are able to do. बच्चे इंग्लिश क्लास अटेंड कर लेना. और अभी मैं बायो का पेपर हाँ अभी शेयर करूंगी सेकंड लिंक में. आज रिप्रोडक्शन रिवीजन ना करके आई विल शेयर द बायो पेपर विद यू. ओके, अभी हम लोग अभी मीटिंग में वही करने वाले हैं. सो elephantiasis, Wuchereria bancrofti, Wuchereria mullei, and the agent was female Culex mosquito. Symptoms are what? Chronic inflammation, mostly in the lymphatic vessels of the lower limbs and genital organs. What is chronic inflammation, children? Chronic मतलब क्या होता है and inflammation क्या होता है? Any idea? Chronic का मतलब क्या होता है? Chronic मैम disease. थोड़े दिनों के लिए मैम Chronic में कुछ टाइम के लिए. मैम ज्यादा दिन के लिए नहीं. और मैम Chronic इन्फ्लेमेशन मैम severe. सूजन. Chronic and acute diseases पढ़े होंगे. मैम severe diseases Yes, ma'am. I think. मैम लंबे Okay. समय के लिए. लंबे समय, for a long tenure of diseases we have chronic diseases. Very good. Now we move on to inflammation. What is inflammation? Normal common language में अगर हम बोले तो सूजन मैम. सूजन. yes, सूजन हो जाती है. And inflammation actually कुछ नहीं होती है. This is the fighting mechanism of the body. If some pathogen enters your body which is disease causing, तो human body क्या करती है? उसको fight करने के लिए कुछ antibodies बनाती है which we all know. So extra cells are being produced in the body जिसके कारण वो वाला जो part है वो थोड़ा swell up कर जाता है. Basically it is a defense mechanism of the body. हमें बाहर से देखने में लगता है नुकसान हो रहा है but it is not actually harmful. It is that your body is trying to fight against that particular problem or the disease. So symptoms are chronic inflammation in the lymphatic vessels of the lower limbs and the genital organs, mainly where the worms may live for many years. So normally the worm is going to live for many years in which part of the body? Either the जल्दी बताइए lymphatic vessels of the lower limbs, Lower पैरों में limbs. Lower limbs और the and genital बेटा organs. इस पे वापस आइए. When we did this roundworm वाला, ये intestinal parasite था. Is it okay? Please remember this. There is a difference over here. Ascaris वाला जो है roundworm, that is intestinal parasite. That means this parasite will live in the body of the host in which area? In the intestines. But यहाँ पे it is going to survive in which part? The lymphatic vessels of the lower limbs and the genital organs. Is it okay for everybody? Got the two differences? अब जल्दी से करते हैं. Helminthic diseases दो पढ़े थे. कौन से नाम बताइए? Ascariasis, Ascariasis. Ascariasis. Elephantiasis. Helminth. ठीक है? Okay, let me hide this. Ascariasis का वो बताइए. Causative agent. Helminth. Ascaris lumbricoids. Ascaris lumbricoides. lumbricoid. अमन आपके पापा का नाम क्या है? मैम नेकपाल सिंह. अरे बेटा, कल आपके पापा का ही फोन आ रहा था और मैं रिसीव नहीं कर पाई. मुझे लगा अननोन नंबर है, फीड नहीं था और वो ट्रू कॉलर में यही नाम दिखा रहा था. बाद में मुझे रिकॉल हुआ सिंह से कि हो सकता है कि आपके पापा कॉल कर रहे हो. ठीक है, आप पापा को मैसेज कर देना कि मैम वो सिंह सॉरी शी कुड नॉट रिसीव योर कॉल. अब वो आज कल में जब चाहे कॉल कर सकते हैं. उनका Okay. फोन आया था बट आई कुड नॉट रिसीव. मैंने सेव नहीं कर रखा है नंबर, बट वो ट्रू कॉलर पे यही नाम दिखा रहा था. फिर उस समय तो मैंने उठाया नहीं. दिक्कत, देयर इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली. आई एम हैंडलिंग 9 to 12, तो वो बहुत सारे लोगों का फोन आता है. उस चक्कर में मैं जरूरी उठाती नहीं हूँ अननोन नंबर्स में. बट देन लेटर आई रिकॉल्ड कि सिंह लिखा है तो मे बी इट्स योर डैड, बिकॉज वंस ही टोल्ड मी ही विल कॉल मी टू आस्क अबाउट यू. तो हो सकता है. चलो तो फिर आज अमन की शिकायत करेंगे. ठीक है? पॉजिटिव एजेंट ऑफ सबसे बढ़िया तो उत्कर्ष है. कभी बात ही नहीं कराई घर वालों से. शिकायत करनी भी हो तो कर ही नहीं सकते. क्यों उत्कर्ष? नो मैम कभी कर लेना. वो तो मैम 12 के बाद. ऐसे ही स्माइल करके सबको नो मैम यस मैम करके सबको फिट रखते हैं. यस बच्चे, नेम बताइए एजेंट का. Ascaris lumbricoids. Ascaris. Ascaris Ascaris lumbricoid.
बेटा बस 3 कीवर्ड्स याद रखना इसमें, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस नंबर 1, नंबर 2 इंटेस्टाइनल पैरासाइट एंड नंबर 3 फीसेस। ये बस, और कुछ भी याद नहीं रखना है। इसको आप इलैबोरेट कर दोगे, पूरा मैटर प्रिपेयर हो जाएगा। कॉजेटिव एजेंट आ ही गया, फिर उसके बाद कैसे ये स्प्रेड हो रहा है कंटामिनेटेड वाला, वो पार्ट आप बता ही दोगे। दैट इज ऑल यू नीड टू रिमेम्बर। इसमें एलिफेंटियासिस यू बेसिकली नीड टू, बेटा एलिफेंटियासिस क्यों कहते हैं इसको? सिम्टम्स पढ़ने के बाद शायद आइडिया लग गया होगा। मैम वो क्योंकि स्वेल हो जाता है स्वेलिंग आती है, तो स्वेलिंग। एलिफेंट की तरह हो जाता है। एग्जैक्टली, जो पैर होते हैं वो बहुत मोटे मोटे स्वेलिंग वाले हो जाते हैं, लाइक द Yes, फीट ऑफ एन एलिफेंट, सो वी कॉल इट एज एलिफेंटियासिस। लेट्स मूव ऑन टू, ये कौन से डिजीज थे दोनों जो अभी पढ़े थे? एस्कैरियासिस एंड एलिफेंटियासिस। helminthic. हेलमिंथिक We were doing infectious diseases, इसमें helminthic diseases are already done. अब जल्दी से हम लोग फंगल डिजीजेस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कितना रहेगा? टारगेट फंगल डिजीजेस, कंट्रोल मेजर्स, दैट इज इट। फिर हमारी infectious diseases खत्म हो जाएंगे। There are only 2 parts of the chapter, infectious and non-infectious. आज हमारा infectious खत्म हो जाएगा। मैं पिछले वाला रिवीजन एक बार जल्दी से ले लूंगी। फंगल डिजीजेस में सबसे पहले we have ringworm. ओके, एक ही फंगल डिजीज है इसलिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हेलमिंथिक, हाउ मेनी इन योर सिलेबस? जल्दी से नाम बताओ दोनों के। एस्कैरिस एंड Ascaris elephantiasis. एलिफेंट। अरे Now we'll move on to Yes, fungal disease, only one in your syllabus, that is ringworm. Most common infectious disease in humans. Chapter complete हो जाए तो मेरे साथ एक टेबल बनाएंगे हम लोग एक दिन क्लास में। I'll tell you how. कैसे हेडिंग डाल के कैसे कैसे हम लोग causative agents का एक टेबल बना लेंगे। That is the best way to prepare this chapter. Beta, most common infectious disease in humans, it is this only, ringworm. Causative agents of ringworm are fungi which belong to the genera Microsporum, number 1, Trichophyton, number 2, Epidermophyton, number 3. चलिए जल्दी से करते हैं. Which are the 3 genera which cause ringworm disease? Microsporum, please speak out. माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम Trichophyton, Tricho, break करो यहाँ पे. Trichophyton, speak the second one. ट्राइकोफाइटोन, And Epidermophyton. एपिडर्मोफाइटोन, चलिए जल्दी से बताइए. All the 3 genera which generally cause this disease. Name them. Microsporum, माइक्रोस्पोरम, टाइक्रो, Trichophyton, एपिडर्मोफाइटोन। Epidermophyton. अभी मैं हाइड करके I'm going to ask you again, तो जल्दी से याद कर ले रहे हैं. Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton. Symptoms: dry and scaly lesions on various parts of the body. What are lesions? What do you mean by lesions? Lesions का कुछ आइडिया है क्या होते हैं? नो मैम। No, ma'am. नो मैम मैम बेटा- अपर स्किन जो ड्राई हो जाती है। मुंह जैसा कुछ चोट वोट लगी। मतलब what do you call it in Hindi? How to tell you? वो क्या हिंदी में फोड़ा जैसे बोलते हैं? What do you call it? वो थोड़ा सा आउटग्रोथ हो जाता है, कभी कभी उसमें पस होती है, कभी कभी नहीं होती है. यस होती- मैम, यस मैम। तो पिंपल्स बेटा यस, समटाइम्स जब उसमें पस नहीं होती, जैसे हम देखा होगा आपने, स्वेलिंग होती है, इसको फोड़ा बोलते हैं, पता नहीं पंजाबी में, वॉट एवर लैंग्वेजेस, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड इन हिंदी दाना। एग्जैक्टली. हाँ, दाना टाइप समथिंग. So this is a dry lesion. Such a lesion is known as a dry lesion. Sometimes उसमें पस आ जाता है, then it is known as a wet lesion. पस निकाली जाती है, फिर कई बार जब चोट लग जाती है, नेल के पास भी आपने देखा होगा उसमें पस चला जाता है. So those are wet lesions. This is, I'm talking about dry lesions. This is found on skin, nails, scalp. What is scalp? What do you mean by मैम scalp? सर, मैम Skin सर का of मैम बोलते हैं scalp. जैसे skin of आपके head. hair attached है ना, yes, on your head जैसे hair attached है, that part is your scalp. Intense itching, lot of itching on that area. Ringworms are generally acquired from soil or by direct contact with contaminated articles such as comb and towels used by an infected person. That is the main reason we say कि कभी भी दूसरों की comb या towel use नहीं करना चाहिए, because it generally spreads from contaminated articles and it causes a lot of itching. The main problem in this disease is there's a lot of itching. Heat and moisture help in the growth of the fungus in the folds of skin. Okay, 2 things which will support the growth of this fungus. One is heat and the second is moisture.
especially in which areas? The Gaussian areas. Gaussian area between the fingers of the toe. What is Gaussian area? समझ गए आप? Between the fingers Yes, of sir. the toe. This area is known as what area? This is known as the Gaussian area. Any problem in this fungal disease? Most common infectious disease in humans. नाम बताइए जल्दी से. Which is the most common infectious disease? Ringworm. 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 Causative agents, mainly 3 genera of fungus हैं. पहला Microsporum. What are the other 2? Trichophyton, epidermophyton. Trypophyton, epidermophyton. एपिड्रोडर्मोफाइटा. Symptoms में mainly यही याद रखना है. Dry lesions. Dry lesions कहाँ कहाँ पे होते हैं? Skin, nails and scalp. याद कर लीजिए 3 places. Skin, nails, scalp, and what is there? Intense itching is there. Basically, it spreads by contaminated articles such as comb and towels. दो चीजें जो grow help करते हैं, their heat and moisture. And basically, this grows maximum in which areas? The Gaussian area. What do you mean by the Gaussian area of the human body? फिंगर्स के इधर नीचे वाली तरफ होगा. Exactly. Fingers. Okay, between the fingers of the toe. जो between soft the skin रहता है, very soft skin between the fingers of your toe. That is what we call as the Gaussian area. Generally वहाँ पे cleaning and hygiene का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो जब sweat आता है, तो ये problem आती है. That is why जो लोग ज्यादा देर shoes पहनते हैं, continuity में जिन लोगों के working hours बहुत ज्यादा होते हैं, जिनको 14 hours, 13 hours shoes पहनने होते हैं, उनको क्या suggest किया जाता है कि वो foot powder लगा के shoes पहने. Fingers के बीच में क्या लगाना होता है? Foot powder. How it helps them? अगर sweat आता भी है, तो वो वहां पे रुक नहीं पाता है between this in the Gaussian area. Otherwise 13-14 hours अगर कोई shoes पहन रहा है, तो फिर sweat का problem आता है. And वो sweat अंदर ही रहता है socks के अंदर पैरों में ही. And that sweat actually causes this problem. फिर खुजली start हो जाती है, जिसे हम normal words में बोलते हैं itching. This is ringworm's issue. So normally people who have to wear shoes for longer hours, they are always suggested by the skin specialist, dermatologist, to use a foot powder. तो पहनते समय एक बार पैरों में foot powder लगा के and then socks पहननी चाहिए. Even if you have to go on a long journey and where you have to wear shoes or socks for longer hours, we should prefer this. Cotton socks and foot powder. That is the only solution we have. Of course, cotton socks is one more option. Maintenance, how will you control infectious diseases? Maintenance of personal and public hygiene. For personal hygiene, this is very simple. Keep your body clean, consumption of clean water. For public hygiene, proper disposal of waste. Beta headings yaad kar lo. Public hygiene, personal hygiene. Periodic changes, cleaning and disinfection of water, reservoir, pools, cesspools, tanks. ये सब लिख लोगे आप अपने आप, कुछ नहीं है, बस headings करते हैं. For vector-borne diseases such as malaria, eradication of vectors and destroying the breeding sites. Example using mosquito nets and repellents. ऐसा इसको complete करके मैं दूसरी वो लगा ही देती हूँ slide. For airborne diseases, avoid contact with the infected person or their belongings. And the last is vaccination and immunization. Only let's learn the headings. First one was what? Which hygiene? Personal hygiene. Personal hygiene. Second one was? Public hygiene. Public hygiene. Third is for vector-borne diseases, you know, eradication of vector sites. Then for airborne diseases, avoid contact with infected person. And last is what? Last is vaccination and immunization. So आज हमने ये करा एक तो amoebiasis. Causative agent is the parasite. What is the name of the agent? Entamoeba histolytica. Histolytica. सब बस इसमें दो main चीजें हैं. Entamoeba histolytica, and it is found where in humans? Where will you find it in humans? Intestine, laryngeal. Yes. Intestine. Very good. Then we did two helminthic diseases. One was ascariasis. The next is Elephantiasis. Elephantiasis. So ascariasis में what was the causative agent? नाम बताइए जल्दी से helminth का. Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides. And second thing which we need to remember is contaminated water. And second we come to elephantiasis. Elephantiasis के दो main worms का नाम बताइए. Wuchereria. Wuchereria, Bancrofti, or Wuchereria Wuchereria bancrofti, Wuchereria malaili. One day we'll revise these spellings only in the class. When I pick up revision sessions, so in सब के causative agents के नाम याद कराऊंगी and spellings याद करेंगे.
Fungal diseases में, what are the 3 common genera for the fungus? Microsporum, 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 Trichophyton. Trichophyton, Epidermophyton. Dermophyton. What are the symptoms? Dry Dry license, lesions, हाँ मैम sting, scalp, Okay. Where are Itchy dilations scalp. found in the ears? What skin, specifically? nails. Yes, very good. Skin and nails. And we talked about a specific word, Gaussian area. What is Gaussian area? between area the between the Space Area between between fingers. fingers of toe. बहुत बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया. And then we are coming to the next. What are the 2 conditions which help in the growth of the fungus? Heat and Heat. moisture. What are the 5 headings for control measures of infectious diseases? for personal hygiene, public hygiene, Personal hygiene, public vector-borne hygiene, disease, airborne Mhm. disease, and vaccination Personal and hygiene, vector diseases, immunization. and airborne diseases, vaccination and immunization. So this is all about your which kind of diseases? Infectious diseases. So we had categorized in the beginning, if you remember, we had done a flow chart. मैंने flow chart याद करवाया था शुरू में. Though I'll be taking up again revision. So infectious disease part is done. Now we'll just be doing non-infectious diseases tomorrow. So another 2 minutes. Should I share the paper with you first? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Class will get over at 8:40 today. So we are left with only 20 minutes. Let me share the paper with you. Just give me 1 minute. Beta, there are 6 minutes only left for the meeting. So फिर वो कट जाएगा. So let me finish the meeting here and start a fresh meeting so that paper के बीच में फिर meeting कट नहीं हो. Okay? Yes, ma'am. Let's leave. Yes, Let me ma'am. start a new meeting and share the new PDF with you. Okay?